हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गौतम डेवलपर्स चैनल। ये हमारे HTML कोर्स का सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में हम देखेंगे कि आप HTML कोड को किस तरह लिख सकते हैं। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने HTML का इंट्रोडक्शन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, सो HTML कोड को लिखने के लिए आपकी कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई विंडोज पीसी या फिर मैक होना चाहिए जहाँ पे आप HTML कोड को लिखेंगे। उसके बाद आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उस इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और आपको एक वेब ब्राउज़र भी चाहिए। वेब ब्राउज़र आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, the one suits you. If you have fulfilled all the requirements, now let's move towards the next part. Okay, how to write HTML code. हम HTML कोड को लिखेंगे कैसे? We can use Notepad in our computer to write HTML code. हम HTML कोड को लिखने के लिए अपने कंप्यूटर के अंदर जो नोटपैड होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम अपना कोड फास्ट तरीके से लिखने के लिए और बेहतर एफिशिएंसी के लिए एक IDE का यूज़ करते हैं। IDE क्या होता है? IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। बेसिकली एक IDE जो होता है वो हमारी प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग को काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर लेता है और इससे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट नहीं होता, हमारा टाइम बच जाता है। अब किस तरह वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ओके, इंस्टॉलेशन ऑफ एन IDE। IDE बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है और हमें एक ना एक IDE इंस्टॉल करना पड़ता है अपने पीसी के अंदर ताकि हम कोड को एफिशिएंसी के साथ लिख सकें। फिलहाल मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा IDEs अवेलेबल हैं, लेकिन जो टॉप पे हैं अभी वो है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 4, एटम, नोट प्लस प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड और ब्रैकेट्स। आप इनमें से कोई भी IDE इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने कोई भी IDE इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल के अंदर हम विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी IDE डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन पांचों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके डाउनलोड पेज का लिंक मिल जाएगा और जो IDEs पहले हमने जिनकी बात की है उनका डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोर्स के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड का ही इस्तेमाल करेंगे। Currently, when I'm making this video, this is March the 17th, 2023 और Microsoft Visual Studio Code का वर्जन 1.76 चल रहा है। अगर आप इस वीडियो के फ्यूचर में देख रहे हैं तो probably इसका डाउनलोड प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। Okay, now if you want to download Microsoft Visual Studio Code, go to the link in the description and you will see a page like this. Now, if you're on Windows, just click on the download button on the left side, or if you're on the Mac or if you're on Linux, then click the drop down from over here and select your relevant version. So currently I'm on Windows, so I'm just gonna download it. Let's click download, and once you click download, you're gonna be redirected to this page, and as you can see on the bottom left, the downloading has been started. Now I'm going to pause the video so I could skip the time. So the downloading, as you can see, the downloading complete हो चुकी है. Now we can close our browser, and now let's go to our downloads folder. अब आप downloads folder में जाएंगे, आपको इस तरह का एक मिलेगा VS Code user setup. Now let's open it or let's run it. Okay, अगर आपको इस तरह का error आता है, just click OK and it will open up the setup. Now you can read it if you want. This is the license agreement for using the software.
इस सॉफ्टवेयर का डेवलपर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है, विच मीन इट इज़ अ टोटली सेफ एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर. Now you have to click on I accept the agreement, click on next. Now here you need to set your installation path where you want the software to be installed. Once you've done it, click next. Here if you want a start menu folder, you can click you can leave this checkbox empty, but if you don't want it, you can click it. Now I want it, so I'm just going to leave it blank and I'm going to click next. Now pay attention to on this page. First of all, it is your own choice if you want to put an icon on the desktop. I want it, so I'm going to put a check mark on it and add open with code action to the Windows Explorer file context menu. I'm going to check both of these. Okay, now the main and the most important thing you need to check is this. Add to path requires shell restart. You need to check this, else you might face problems while running the IDE. Make sure this is checked and click next. Now just click install. And now Microsoft Visual Code has started installing in your computer. Once it completed, just check this launch Visual Studio Code and click on finish and close all the windows you had opened earlier. Now, on the desktop, you could also see that there's a Visual Studio Code application over here. Now, as you can see, the application has opened. Now, once you've opened the software, you're gonna see two pages over here. One is welcome and one is release notes. You can read the release notes if you want, but it's not necessary at all. Just close it. And now you want to open a folder of your project. So just click open folder. And now I'm just going to create a new folder on my desktop. And I'm going to name it HTML course. And now just click select folder. You can see on the left side a folder has opened. Now I'm getting a warning that do you trust authors of these files in the folder. As we have created this folder right now and we are the owner of the computer, you can just click yes, I trust the authors. Okay. Now to write HTML code in this IDE, we need to install a small extension. The extension is going to help us view our output of what we've done in our code file in HTML. So to install the extension, just look at your left side on the panel and you're going to see this extension. इसके ऊपर click करें and just search live server. Okay, now it will be this one on the top. It is live server by Ritwik Day. It has almost 433 reviews, and you're just going what you're going to do you're going to see a install button like this one. You're just going to click install and it's going to install. I'm just going to show you how it works. Okay, इसको दोबारा सर्च करता हूँ लाइव सर्वर. ओके 32.2 मिलियन इसके जो हैं
डाउनलोड्स, आपने इसी को डाउनलोड करना है। नाउ हियर यू कैन सी द इंस्टॉल बटन, ये इंस्टॉल बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। इट शुड नॉट टेक मोर देन अ फ्यू सेकंड्स। नाउ आप देख सकते हैं ये इंस्टॉलेशन की कंप्लीट हो गई है। नाउ वी कैन क्लोज दिस पेज and go back to our explorer. Okay, now we earlier opened a folder. Now in this folder, let's create a new file. You can click on this button to create a new file, or you can just hit Ctrl N on your keyboard to create a new file. Let's create a new file. I'm going to name it index.html. Remember, whatever the name of the file is, for example, you can put course, but in the ending, the extension of the file must be .html. Else, your code won't run. Okay. If creative, we created a new file. Okay. Now, let's just try running some basic HTML code. Okay, I'm just going to put a simple text over here. Um, just gonna put welcome to Gotham Developer. लेट्स सेव द फाइल को सेव करते हैं। जस्ट आपने बस कीबोर्ड पे कंट्रोल एस को दबाना है, कंट्रोल प्लस एस, इन दोनों को इकट्ठे दबाना है। ओके, नाउ अब आपने क्या करना है, अपने कर्सर को जो है माउस को फाइल के ऊपर लेके आना है और कहीं पे भी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन नजर आएगी ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है, या फिर आपको इधर बॉटम में एक छोटी सी ब्लू कलर की बार नजर आएगी और इधर लिखा होगा गो लाइव या फिर ओपन विद लाइव सर्वर। यू जस्ट गोइंग टू क्लिक इट। currently I don't have the option, unfortunately, so I'm just going to click right click and open with live server. When you click Open with Live Server, a page will open, showing the result of our code. Okay, हमने सक्सेसफुली एक IDE को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। इन द अपकमिंग वीडियो हम HTML का कोर्स स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ये हमारी HTML कोर्स की पार्ट 3 की वीडियो होगी। And now today video has come to an end. Thank you very much for watching. Please subscribe to Gotham Developer. If you like this video, please subscribe. If you have any question, you can comment down or you can contact me through Discord. Thank you for watching. Bye bye.